it was such a nice experience working with Salman sir. I think he's the greatest guy our industry has. Honestly, Sonu sir is the Superman of India. उनके लिए तो मैं जितनी तारीफ करूँ वो I think थोड़ी कम होगी because this man is something else. So there was also a comment by Prince Narula that during your guest appearance in Bigg Boss season 9, you kind of demotivated him. So how do you look at that statement? In fact, like I treated him like a younger brother. The very first day I told him, "अरे यार तू छोटा भाई जैसा है, तू मिलके अच्छा कुछ शो को हिट कर दे, something like that." But then I did not realize the छोटा भाई तू करके बात करेगा. ये छोटा भाई सीधा आके then I was like भाई भाई गया अभी साइड में. Hi guys, I'm Karina Michwal and we have here with us fan favorite and the very dashing Gautam Gulati. Hello Gautam, welcome to Bollywood Hungama. Hi, how are you? I'm good. How are you doing? I'm very well, thank you. Thank you so much. And would you like to tell our viewers where are you connecting us from? I am in Miami right now. And what takes you there? Work or vacation? Work and vacation both. Hope you're having a great time there. Yeah, I'm having a great time. So let's begin with Roadies. You've had quite a journey with Roadies. You have returned there as a judge, where 16 years ago you were rejected as a contestant in the audition itself. So tell us, what was that feeling of rejection back then, and now coming like a boss as a judge? Honestly, it's a good feeling to be at a place where you always wanted to be, and that too in a different way now. This time पे as a contestant, I tried long time back, when I had finished my 12th and उसके बाद मैं गया था इसके audition के लिए, I still remember, and उस time पे rejection हो गया था. But अब as a gang leader, as a judge on the show, uh, it's a different feeling, honestly. But I feel great. I feel very happy. So the season has been received really well by the fans, but it is also making headlines for the spats between you and Prince Narula. I also read that there came a point where you were thinking of quitting the show. So how are the things now? What would you like to tell us about that? Yeah, in the beginning there were a few things which I did not realize that something like this would happen as well, and मुझे कल के लिए ऐसा लगा कि guys, what's up, like what's happening, that this coping is coming my way from his side. So उस टाइम पर जैसा लगा शायद ये उसका normal behavior होगा या whatever, or maybe he's concerned about a few things. But slowly I realized that maybe that's the way I'll have to deal with this person, and my nature is not like that, as a professional actor, maybe we get into a fight with someone, or I've been working since 16, 17 years now. तो कभी ऐसी सिचुएशन नॉर्मली फिल्मों में या फिर टीवी शोज में या फिर होस्टिंग में नॉर्मली आती नहीं है. बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक जज दूसरे जज के साथ एक गेटिंग इनटू an argument or a fight like that, or misbehavior, or the way the other person was talking. So it was new for me. So I was like, what is happening? I was like, and nobody could control at that time that, it is naturally happening. And so that's where I had to take this step. And I was like, it's like how we deal in our life as well, that we shouldn't get into any argument with people. We shouldn't get into any fights with people. So one should just walk off, right? आपके भी पेरेंट्स घर में ही सिखाते होंगे, बेटा लड़ाई मत करो, अच्छा आपको लगे कुछ प्रॉब्लम हो रही है वहां से बस चले जाओ, इधर उधर हो जाओ.
बट यहाँ पे ये फाइट रोडीज की होती है, उसमें जजेस की नहीं होती। पर जब एक ऐसा सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो इसमें आप सही भी हो, आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग दैट आई कॉल पीपल, आई कॉल द चैनल, आई कॉल द प्रोडक्शन कि ये सिचुएशन मेरे सामने आ रही है और व्हाई इज इट हैपनिंग, यू नो, unnecessarily something like this is being done. And that's where I had to take this step, and I thought, why to, stop somebody else's work? किसी और के पेट पे क्यों लात मारनी? It's better है मैं खुद walk off करके चले जाता हूँ, because I was right in that situation, and everybody knew on set as well that this is something one shouldn't take. And as a human being also, as a gentleman also, I found it kind of very wrong कि ऐसा बिहेवियर हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, जजिस के बीच में नहीं होना चाहिए, रोडीज के बीच में देखने को मिलता है, वो सब चीजें चलती हैं। सो जब वो सब वहां पे होने लगा तो मुझे लगा कि यार अब मैं किसी को क्या फोन करूँ, यू नो ये हुआ या वो हुआ, कंप्लेन नहीं करना चाहिए, कभी भी लाइफ में खुद निकल जाना चाहिए। इट्स बेटर है कि आपको लगे कि हाँ यार नेगेटिव स्पेस है, तो यहाँ से मैं खुद चले जाता हूँ, मैं कि किसी का काम रुकवा, चाहे मैं सुनूं ठीक, बिकॉज सामने वाला इंसान समझ नहीं पा रहा था वो चीज। तो मैंने सोचा चलो, लेट मी टेक अ स्टेप, बट देन द नो whole thing changed later on when they realized it as well that this shouldn't happen. It, then I that's how slowly things started working, and they all came back to me. In fact, Prince came back to me and said sorry as well. I didn't accept it at that time, and I thought, chalo, let me give some time. And then Sonu sir also told me, Father, we understand he's wrong, which is let's just give a shot, and let's just not get into something like this. You are doing really well. So why do you go away from it? That's how it all started. And then when he said sorry, I said, okay, I'm good. So there was also a comment by Prince Narula that during your guest appearance in Bigg Boss season 9, you kind of demotivated him. So how do you look at that statement? See, देखो हर इंसान का ना जिंदगी में कुछ चीजें समझने के तरीके होते हैं। एग्जाम्पल मुझे बिग बॉस हर साल ऑलमोस्ट बिग बॉस के हाउस में बुलाते हैं हर साल। तो कई बार वो हमें इन ईयर देते हैं, ऐसे कान में ना, ऐसे इन ईयर देते हैं हमें बोलते हैं कान में, जैसे सलमान सर भी पहनते हैं ना, इन ईयर पहनते हैं, हर चीज डिस्कस्ड होती है ये अबाउट द शो एंड एवरीथिंग। तो हमें बोला जाता है कि this is what you need to do, and that is what you have to do. Sometimes few things that you need to talk to this person or whatever. तो उसमें मैं इन ईयर की ज्यादा मेरी शर्त रहती है कि मैं इन ईयर पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, because I want to be real with people, and whatever sometimes they will say something to me to tell someone which could become a problem for me later. So naturally जितना हो उतना ज्यादा बेटर होता है। तो जब मुझे उस घर में, मुझे याद है उस टाइम पे भेजा गया था, तो मुझे हर इंसान को कुछ बोलना था इन एन इनडायरेक्ट वे, क्योंकि हम लोग घर के, आपको भी पता है बिग बॉस से, हम घर के अंदर जाके किसी को एडवाइस नहीं दे सकते हैं, बाहर की बात को आउट नहीं कर सकते हैं, उनको करेक्ट आंसर या तरीका बता नहीं सकते हैं, या आप ये करो या आप वो करो, वरना सामने वाला समझ जाएगा उसको क्या करना है। करेक्ट। So when I was told to do something like that, but I had to speak to everybody in the house. आप कभी भी ये चीज नहीं सुनोगे कि मैंने प्रिंस को ये बोला कि आप ये शो नहीं जीतोगे, या आप मुझे हमेशा, मैंने वहां पे कम से कम घर के सारे लोगों से बात की, एंड आई वाज टोल्ड टू गिव देम अ डायरेक्शन, एवरीबॉडी। For example, you are a Big Boss house player. You are inside the house and you are going wrong somewhere. I cannot tell you the right answer. I'll have to tell you in a very indirect manner that आप जैसे छिपके खेल रहे हो थोड़ा सा,
थोड़ा सा बाहर आओ, ताकि सामने वाले को डायरेक्ट आंसर समझ में भी ना आए, और वो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करे मेरे जाने के बाद कि हाँ मुझे, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मुझे ऐसा बोल के गए हैं, मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट। जब मैं बिग बॉस में था हमें भी ऐसे आती थी, हमारे पास लोग आते थे इनडायरेक्ट वे में कुछ बोल के जाते थे, और फिर हमें कुछ समझना होता था उस चीज। तो ये इंसान की खुद की समझ की बात होती है कि that person couldn't understand what I was trying to say, and I never said that you will not win this. I said some dialogue like, कि चेला कभी नहीं जीतता, उसके ऊपर वाला जीतता है। आप चेला लग रहे हो, you need to step up, and you need to, you know, play your game in a right way, like openly, like a शेर। कि हाँ कि मैं आ गया और मुझे किसी के पीछे छिपके खेलने की जरूरत नहीं। I have to win the show, and I have to do really well. So that's what I meant, but he took it in a different way. And when I was sitting over there as a judge, I'm like, यार ये कहाँ पहुंच गया यार, ये कहाँ कहाँ ये बात चली गई है। So that was kind of, but अपने आप को कभी ज्यादा explain नहीं करना चाहिए, and I was quietly listening because one person is been 6 7 years already, and this person has something like that in his head against me. So imagine कि किसी ने अपने मन में इतने घर करके रखा हुआ है इस चीज का कि मैं वो बोल के गया था, एंड आई मेंट इट इन अ वेरी डिफरेंट। In fact, like I treated him like a younger brother. The very first day I told him, अरे यार तू छोटा भाई जैसा है, तू मिलके अच्छा कुछ शो को हिट कर दे, समथिंग लाइक दैट। बट देन आई डिड नॉट रियलाइज दैट छोटा भाई तू करके बात करेगा, ये छोटा भाई सीधा आके देन आई बोले कि भाई भाई गया अभी साइड में, लेट मी फिगर दिस आउट माय वे, जो कि आपको शो में धीरे धीरे देखने को Right. So now I'd like to take you a little back मिलेगा। Yeah. to of a very beautiful show called Diya Aur Baati Hum. Oh So tell yeah. us, what were your fondest memories of the show and why did you quit it all of a sudden? See, मैं ऑलरेडी ना, मुझे मुझे कभी ब्रेक नहीं मिला था व्हेन आई वाज डूइंग टीवी शोज ना। सो आई Mhm. स्टार्टेड एट द एज ऑफ 19 or 20, okay, and I was very busy. I was so busy that I literally had to call the producer and tell them that dude, I cannot work with you guys anymore. मुझसे और काम नहीं हो रहा है, मैं 114 घंटे से शूट कर रहा हूँ बिना रुके बिना सोए, और डबिंग भी कर रहा हूँ। अब मुझे पता है मुझे बहुत मेहनत करनी है, पर इतनी मेहनत नहीं करनी है कि जिससे मेरी हेल्थ खराब हो जाए। बिकॉज टीवी शोज में आपको पता ही है कि once you give little time over there, it takes, so you have to give your full time. Like एक शो का कॉन्ट्रैक्ट ही 4 साल का होता है, 3 या 4 साल का होता है, या 5 साल का भी करते हैं वो लोग। तो उसमें I did not get time at all because Ekta Kapoor had given me almost 3 shows at a time. तो एक शो खत्म शूटिंग करी, दूसरे शो पे, दूसरे शो की शूटिंग खत्म करी, तीसरे शो, तीसरे की खत्म करी, फिर पहले वाले शो, फिर दूसरा, फिर थर्ड। So it was kind of very hard for me, but somehow I managed, and then I did only one show, which is called Diya Bati. Later on, after 5 6 years, I started Diya Bati, and Diya Bati में मैंने around 3.5 साल शूट किए, जिसमें ब्रेक नहीं मिलता। And I always needed that little time. And I remember मेरी उस टाइम पे फिल्म आई थी, जिसकी शूटिंग के लिए मैं पंजाब गया था, और वो फिल्म ऑफिशियली सिलेक्ट हो गई थी कैंस फिल्म फेस्टिवल में। Darko? डरपोक, या। तो डरपोक कैंस में गई थी, तो उस टाइम पे मुझे मौका मिला फ्रांस जाने का फॉर द रेड कार्पेट and for the screening of the film. And then it was a very next level experience for me, which I really liked for a change, because मैं टीवी shows 8 10 साल से कर रहा था। मैंने सोचा यार this is something really nice that I did this small short film, and it did really well, that I got a lot of people liked it, even in France when people were seeing, people जो बाहर के लोग भी हैं, उन्होंने भी देखा, so they liked my performance in the film. So that is something which motivated me to take a step ahead in life and take a risk.
The risk was to leave the show. उस टाइम पे मुझे बिग बॉस ऑफर नहीं हुआ था, बट फिर भी मैं जैसे ही वापस आया तो मैंने आते ही नोटिस दे दिया कि यार अभी कुछ नया करना है. Even though I was paid really well in the show because it was such a like big show, I'm sure you know about Diya Aur Baati. TRP में सारे shows से बहुत बड़ा है. फिर भी मैंने वो रिस्क लिया एंड देन आई थॉट कि ऐसा रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. एंड दैट्स वेयर जैसे वो शो मैंने छोड़ा उस टाइम पे मुझे बिग बॉस आ. एंड छोड़ा भी नहीं था, मतलब उसी के दौरान मुझे याद है कॉल आया था मुझे एंड आई एक्सेप्टेड देयर देयर ऑफर एंड आई थॉट टू लीड द शो एंड आई डिड बिग बॉस एट दैट टाइम. So coming to Big Boss, how Yeah. did your life change after Big Boss? You know, you emerged as a winner, became a household name. So how did Yeah. your life change after this? And did it impact any of your career choices that you gained such massive popularity after it? कि अब बहुत सोच समझ के you have to, you know, make the choices ahead. ऐसा कुछ हुआ? See, it really did well for me even till today. Like मुझे अगर मैं काम से रिलेटेड बात करूँ तो एक डिफरेंट चीज है, अगर मैं प्यार से रिलेटेड बात करूँ तो एक डिफरेंट चीज है. क्योंकि जो मेरा सीजन था उसका जो इम्पैक्ट था वो आज भी इतना बरकरार है, लोगों के मन में है, लोगों के दिलों में है. कि मैं चाहे अमेरिका में भी हूँ, यहाँ भी मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हार्ड कोर फैंस हैं जिन्होंने सिर्फ मेरा सीजन देखा उसके बाद कभी कोई देखा नहीं. They always say. So I get to meet so many people abroad as well that they voted for me and they were online checking all the time that what is he up to, and we voted for you. So that's the kind of love I got from so many people कि वो आज तक मैं उसके लिए अगर जितना भी थैंक्स बोलूं वो कम होगा. सो व्यूवर्स ने जितना मुझे इज्जत और प्यार दिया है, बच्चों ने बड़ों ने, सो वो मैं कभी उसके लिए लाइक आई एम ऑलवेज थैंकफुल एंड आई फील ग्रेटफुल अबाउट दैट. बट रही बात काम की, आई वाज वेरी केयरफुल कि नेक्स्ट क्या करें, अभी क्या करें, इसमें क्या करें या उसमें क्या करें. When I was busy doing events, I was busy doing couple of films जो कि एक एक दो दो करके हर साल आई. बट फिल्म्स भी एक किस्मत से होती है, फिल्म्स का काम भी किस्मत से होता है कि अगर आप लकी हो तो आपको अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाएगी या अच्छे प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, अच्छे डायरेक्टर्स मिल जाएंगे. बट मुझे पहले दिन से ही पता था इवन आफ्टर विनिंग कि स्ट्रगल है. इट्स नॉट दैट इजी हाउ यू फील. Even though I could become an asset for a lot of people, I could become an asset for a lot of filmmakers, producers or directors, but then how they will believe in me, you know that's the question. How they will believe in me. It takes time. हर चीज में वक्त लगता है और हो सकता है शायद वो टाइम कभी आए भी नहीं. ये भी हो सकता है क्योंकि मैं हर तरीके से सोचता हूँ ये लाइफ इज ऑल्सो not fair sometimes. It's unpredictable. Tomorrow, what is going to happen in the next 5 minutes? You don't know. So, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज वहां पे बहुत ज्यादा हुई कि कभी कोई फिल्म आई, मेरी कोई फिल्म आई तो कभी जैसे किसी फिल्म में रोल कट गया, या किसी फिल्म में या कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है जब आप कोई फिल्म साइन कर लेते हो और बाद में जाके वो ढंग से रिलीज ना हो पाए. तो एक एक्टर के लिए सबसे सबसे फनी चीज ये हो जाती है, अरे यार इतनी मेहनत कर दी इस फिल्म के अंदर, इतना सब कुछ जान लगा दी, I tried my level best, but then the film is not releasing. So that's where I started even thinking even more that कि यार अभी मैं साइन करूं कि नहीं करूं, कोई पता चले रिलीज ही ना हो. एक टाइम ऐसा भी आया था मुझे याद है कि मतलब ऑलमोस्ट कुछ फिल्में करने के बाद 6-7 फिल्मों के पैसे पड़े थे मेरे पास. So I had the money for all the 6-7 films, which back of my mind I knew कि इनमें से कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होगी. तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है. तो फिर देन आई आई हैड टू बी लाइक मुझे ईमानदारी से काम करना पसंद है. मैं किसी प्रोड्यूसर का पैसा नहीं रख सकता अपने पास. तो वो जितने भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स थे, जो न्यू फिल्म मेकर्स थे, मैंने उन सबका पैसा वापस लौटा दिया. ये कुछ जो फिल्में की वो अच्छे कॉर्पोरेट्स के साथ की मैंने,
बाकी जो फिल्में जो कि बहुत खास मेरे लिए काम नहीं करी, बट ऐसा फिल्मों में होता है, गैम्बल ये प्रोड्यूसर्स के लिए तो गैम्बल ही तो होता है ना ये, डायरेक्टर्स के लिए भी तो बहुत बड़ा गैम्बल होता है अगर वो किसी एक्टर के ऊपर 20 करोड़ लगा रहे हैं, तो इट्स लाइक हाउ डू यू रिकवर दैट मनी। सो एज एन एक्टर आप सोचते हो चलो हाँ आपको एज अ हीरो फिल्म करनी है, पर उन लोगों का ज्यादा दिमाग खराब होता है when they put so much money. So I completely understand that. I don't blame anyone. I don't blame these producers or actors or anybody. I feel may God bless them with some great, huge hit numbers. Even if they are doing business with some actor who is doing well in the industry, you know, then to do a film with me where जहाँ पे उनको risk लेना पड़े. So I don't even want to take a risk anymore कि मैं कहीं फंस जाऊँ जहाँ पे फिल्म रिलीज ना हो या फिर पिक्चर चले ना. So I wanna only get into projects which are gonna do well for me. So वो धीरे इसलिए मैं थोड़ा सिलेक्टिव काम करता हूँ कि चाहे काम ना करूँ फिल्म का, वो चलेगा बट एक फ्लॉप फिल्म नहीं देनी, वो नहीं चलेगा. So it's better not to do a film than to bloody give a flop. वहाँ वो नाम जब फ्लॉप आ जाता है ना तो फिर वो नाम आपके लिए खराब हो जाता है. एज अ फ्रेशर आज भी चल जाएगा कि हाँ चलो एज अ फ्रेश एक्टर लेट्स टेक गौतम गुलाटी, आई थिंक ही पुल इट ऑफ. War sounds good, but if somebody will say a flop actor, then no. Then I don't want to do a film. I don't want to be a part of a film जिसमें creativity wise कुछ गड़बड़ रही या कुछ problem रही. So that's why I'm very careful about that. It's better to do a TV show like this, like I'm handling Roadies right now. So back of the mind, I knew there is going to be a buzz. Back of the mind, I knew the moment I'm going to enter into the show, I will manage it my way and somehow will give something to these people. So इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेता. Okay, so post Big Boss, you also did Radhe with Mr. Salman Khan. So tell us, how was जी. that experience of working with him this time as a co-star? It was such a nice experience working with Salman sir. I think he's uh, he's the greatest guy our industry has, and बहुत मस्त इंसान है, बहुत बढ़िया आदमी है. और बड़े मुझे तो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं. मुझे मुझे बहुत प्यार दिया उन्होंने, वो मैं कभी भूल नहीं सकता. बिग बॉस के दौरान भी उन्होंने मुझे बहुत इज्जत और प्यार दिया था और मुझे बहुत सपोर्ट किया था वट एवर आई वॉज डूइंग. एंड एट द सेम टाइम व्हेन इट comes to doing the film with him, I think we had a great bonding on set as well. And he was very fond of me. और चिल भी करते थे. काम में भी हम लोग कोई सीन्स होते थे तो साथ में बैठ के उसको डिस्कस करते थे. तो मजा आया था उनके साथ काम करके honestly. And seeing him perform in front of me was something to learn as well, because the way he was doing the action scenes, I think it's unforgettable, because the kind of energy he had while doing those scenes, वो एनर्जी मतलब आज के टाइम पे एक 24 साल के लड़के में भी नहीं होती. जिस तरीके से he was giving one shot, moving from one place to another and jumping, rolling, almost rolling, you know वो देखा मैंने. I was like, I was surprised when I looked at Prabhu Deva sir, and I was like, so what was that? I was like, that's Salman Khan. So Salman Khan is Salman Khan. He's next level. So talking about Radhe again, were you a little bit disappointed because it released on OTT and didn't do as well as it was expected? Was it a kind of setback for you? आ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अगर वो थिएटर में रिलीज होती तो वो जो जितने भी मेरे कई सीन्स थे पिक्चर में, तो वो थोड़े बहुत स्ट्रांग लगते Mm. पिक्चर. जब आप बड़ी स्क्रीन पे पिक्चर देखते हो तो आप वहाँ लोग बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं. क्या होता है ओटीटी पे, अगर आप एक बड़ी फिल्म कर रहे हो, अगर वो ओटीटी पे रिलीज होती है, अगर वो टीवी पे रिलीज होती है, तो इंसान अपनी एक्टिविटीज कर रहा होता है, घर में बीवी बच्चों के साथ खेल रहा होता है, फिर मूवी देख रहा होता है, या फिर फैमिली से बात कर रहा होता है या खाना खा रहा होता है. दैट्स वेयर यू मिस द सीन्स. सो आई people liked my work in the film, but at the same time I'm not disappointed about that.
बट आई जस्ट फेल्ट लाइक हाँ अगर ओटीटी पे अगर वो थिएटर में रिलीज होती, बिकॉज सलमान खान की जो फिल्में होती हैं वो थिएट्रिकल फिल्म होती है टेक्निकली। तो उनकी जो पिक्चर जब बड़ी स्क्रीन पे आती है तो वो सीटियां जब पड़ती हैं, जब लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं पिक्चरों को उनकी, तो एक एक अलग ही उसका लेवल दिखता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अगर वो बड़े बड़े लाइक लेवल पे थिएटर पे भी रिलीज होती तो इट वुड हैव डन इवन बेटर फॉर मी, बट इट्स ओके, लाइफ इज गुड यार, कोई Yeah. ज्यादा टेंशन नहीं। Plus. So ये नहीं let's. तो कुछ और आएगी। Yeah, I'm just asking you about this. How is it like working with Mr. Sonu Sood? I mean, he's such a big star. He's also the host in the Roadies and Yeah. did so much of philanthropical work during the pandemic. So how is he to work with? Honestly, Sonu sir is the Superman of India. उनके लिए तो मैं जितनी तारीफ करूँ वो आई थिंक थोड़ी कम होगी, बिकॉज दिस मैन इज समथिंग एल्स। ये इनको आप फिल्मों से कंपेयर नहीं कर सकते, इनको आप किसी टीवी शो से कंपेयर नहीं कर सकते, इनको आप किसी पॉलिटिक्स से कंपेयर नहीं कर सकते, इनको आप मैं तो कह रहा हूँ इंसानियत से भी कंपेयर नहीं कर सकते। ये उससे भी बड़े लेवल के इंसान है, बिकॉज मैंने अपनी आंखों से जो देखा है, मैं इनके साथ 40 दिन रहा, और उन 40 दिनों में मेरी इनसे दोस्ती बहुत गहरी हो गई, बिकॉज बिकॉज हम लोग सुबह सुबह वर्कआउट करने साथ में जाते थे। और कभी भी मैं लेजी होता था वर्कआउट के लिए, तो every morning 5 o'clock I'll get a call or a message, or if I am not picking up, then he will call my staff. Where is Gautam? सर वो तो अभी सो रहे हैं, उठाओ उसको। अच्छा ओके 5 बजे, मैंने सोचा 7 बजे जाऊंगा या 8 बजे जिम चले जाऊंगा, 9 बजे चले जाऊंगा, या थोड़ा टाइम मिलता है। But he was there every morning 5 o'clock, 5:30, and then I started becoming more active, और ज्यादा एक्टिव हो गया मैं उनकी वजह से, वेयर हम दोनों ने एक दिन भी जिम नहीं छोड़ा, यू नो सो मतलब दिन में भी जाते थे और शाम को भी साथ में हम लोग वर्कआउट करते थे। और उस दौरान मैंने उनकी वो चीज नोटिस की कि जो कि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल शुड नो अबाउट सोनू सूद, कि वो एक अलग ही आदमी। आज के टाइम पे अगर आपसे कोई मदद मांगेगा ना, जैसे आपसे अगर कोई मदद मांगेगा ना किसी चीज के लिए, छोटी सी हेल्प भी मांगेगा ना, आपको किसी को फोन करने के लिए एक फेवर भी मांगेगा ना कि यार इसको मेरा फोन कर दो या मेरा काम करवा दो, आप 10 बार सोचोगे, 10 भी नहीं 50 बार सोचोगे, है ना। अगर आपसे कोई पैसे मांग लेगा ना, आपका कोई रिश्तेदार भी मांग लेगा ना, तो आप 100 बार सोचोगे यार मैं क्या करूँ, दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा। ये आदमी ना दिन रात ये ये अपने फोन पे बैठे होते हैं, अपने फोन पे होते हैं, तो शूटिंग कर रहे होते हैं, शूटिंग कर रहे होते हैं, but most of the time he's on his phone checking some detail about a human being जो तकलीफ में है। जैसे अभी वो पीछे ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे, लास्ट मंथ, मैं उनके रूम में गया हूँ, मतलब 2-3 बार हम लोग डिनर भी साथ में करते थे, तो डिनर के दौरान भी मैंने 2-3 बार यही देखा कि he was just sitting upset like this, he's sitting upset and looking at his phone, and I was like sir क्या वो अपसेट लग रहे हो आप? लाइक नहीं यार, ये लोगों की स्टोरीज देख के ना मेरा दिल बहुत दुख होता है यार। मैंने कहा, क्यों? ये क्या हुआ, क्या स्टोरी? कहते हैं कि ये अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ ना, लुक एट दिस गाइस स्टोरी, दिस गाइस 3 kids were traveling in the train and 3 of them died, तीनों लड़के। and look at this guy look at this guy is traveling with his sister's husband, and they both died in the train. And then when I am offering money to the family, the family is saying kids are not there anymore, बच्चे नहीं रहे तो अब कोई पैसे लेके क्या करेंगे। और बहुत मतलब वेरी पुअर पीपल, लाइक मतलब जो छोटे शहर से, लाइक जिनके पास बिल्कुल पैसा तक नहीं है, वो लोगों ने भी पैसा लेने से मना कर दिया बाय सेइंग समथिंग लाइक दिस, यार अब जब हमारे बच्चे नहीं रहे तो हमने पैसे का क्या करेंगे, हमें कोई मदद नहीं चाहिए, आवर लाइफ इज फिनिश्ड। तो आई सॉ दिस मैन
and I also felt really bad. Yeah, shit. How do you get to know about these stories? It's like यार मुझे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो मेरी जो सोनू सूद फाउंडेशन है हमारे पास लोग मैसेज करते हैं बहुत सारी लोगों की डिटेल आती है हमारी टीम से हर बंदे की एक एक बंदे की डिटेल आती है तो वो जो नेचर मैंने उनको देखा ना लोगों के प्रति मदद करने का और एवरीडे का है वो उनका एवरीडे का ये भी नहीं कि किसी दिन मिस कर रहे हैं एवरी नाइट ही इज सिटिंग he will not sit with you for dinner or party with you or go somewhere with you instead he's always on his phone even if he's sitting with his family or his wife or kids this man is constantly on his phone trying to help someone and calling his staff कि अरे यहाँ पे ये भिजवाओ यहाँ पे ये करो यहाँ पे ये करो तो आई थिंक जो रिस्पेक्ट सोनू सर ने मेरी नजरों में जो उनकी रिस्पेक्ट है अभी आई थिंक इट इज वो बड़े बड़े लोगों किसी की भी नहीं हो सकती क्योंकि Wonderful. ये करना बहुत मुश्किल काम होता है इतना आसान नहीं होता So how would you sum up your Roadies experience? Last two questions, in fact. How would you sum up your Roadies experience, Roadies 19 experience, and where will you see you next? What are the next films or projects you will be part of? सी रोडीज का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा बिकॉज जो रोडीज की टीम है स्पेशली द मेकर्स ये थोड़े नॉटी जरूर हैं आई नो थोड़े नॉटी हैं ये लोग बट ये लोग बहुत सही लोग हैं मुझे बहुत मजा आया इन लोग इनकी जो थिंकिंग है ना बहुत यूथफुल है और especially the makers like this is guy Sagar, Debbie, and the marketing team of Roadies. I know everybody. Like मुझे सबके नाम याद है तो मैं नाम से नहीं बोल सकता हूँ बट वेरी नाइस पीपल मेरा एक अलग एक्सपीरियंस रहा एमटीवी के साथ काम करने मुझे ऐसा लगता है कि 6 साल पहले भी इन्होंने मुझे एक ऑफर किया था ये शो में आने के लिए एमटीवी रोडीज में तो उस टाइम पे मैं एक शो कर रहा था एमटीवी बिग एफ विद गौतम गुलाटी उस टाइम पे इन्होंने एज अ जज बुलाया था रोडीज पर तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा इन अ फन मैनर आई वाज बिजी समवेयर एल्स बट इन अ फन मैनर आई स्टिल टोल्ड देम कि यू नो उस टाइम आपने मुझे रिजेक्ट किया था अब मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ मुझे नहीं करना है इशू तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे मुझे उनको हाँ बोल देना चाहिए था मुझे करना चाहिए था बिकॉज मुझे पता नहीं था कि इतनी सॉलिड और इतनी अच्छी टीम है इन लोगों की लोग बहुत अच्छे हैं एमटीवी के सो जो प्रोडक्शन हाउस के भी तो बानी जैसे भी लोग बहुत अच्छे थे आई थिंक आई ओवरऑल आई एक्सेप्ट दिस फाइटिंग एक्सपीरियंस which was suddenly thrown at me सो आई फील उसके अलावा ये जो एक्सपीरियंस मेरा इन लोगों के साथ था मुझे बहुत मजा आया आई थिंक दे आर द नाइसेस्ट मोस्ट प्रोफेशनल पीपल एंड आई लव बीइंग आई लव वर्किंग विद हाईली प्रोफेशनल पीपल सो आई थिंक दे वर रियली नाइस एंड रही बात मेरे नेक्स्ट काम की सो वी आर लाइनिंग अप वर्क नाउ वी आर लाइनिंग अप एड वर्क राइट नाउ वी आर लाइनिंग अप इवेंट्स वर्क राइट नाउ at the same time we are in talks for a film and for TV series as well so अभी अब उसमें से देखते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में आया है मुझे तो अच्छी लगी है एक दो स्क्रिप्ट्स सो मैं भी उसको पढ़ रहा हूँ एंड होपफुली द मोमेंट आई कम बैक और अभी वैसे इतनी बारिश हो रही है मुंबई में तो काम थोड़ा सा स्लो पड़ गए so I think the work will start from September or October like first week of October or maybe September, May. So let's see. So that's where we are planning to do something else next, which I cannot reveal right now. But definitely it's a film and a series as well. So fingers All right, crossed. all the very best. It was lovely talking Thank to you. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you so much, my dear. Take care. Have a good night. Bye bye.